Yesterday we were talking about a voltage buffer. So the main criteria for a voltage buffer was three requirements. Rin needs to be as large as possible. Capital R naught, the output resistance of the amplifier need to be small, and AV naught, the gain needs to be approaching to 1. So if we have a circuit that fulfills these three requirements, we call it a voltage buffer. तो इसको हम वोल्टेज बफर कहते हैं और ये उन सिचुएशंस में यूज़ होता है जहाँ पर गेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यू ऑलरेडी हैव इनफ सिग्नल स्ट्रेंथ, यू आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द लोडिंग इफेक्ट. तो इसको आप कनेक्ट करते हैं और लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं. एंड वी क्लेम दैट कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर acts as a voltage buffer, and to verify that claim we are going to analyze this circuit and determine its AC parameters AV0, Rin and capital R0, and then we will examine those values. AV0 must be approaching to 1, Rin should be large and capital R0 should be small. तो अगर ये तीन conditions meet हो जाएंगी तो then we can safely conclude that common collector amplifier is a voltage buffer. So let's analyze this circuit and see के इन parameters की क्या value आती है. So since we are given with an AC equivalent circuit, so the next step is to decide which model to use. Here you can see the emitter is not grounded, so our preference is the T model. So T model is the preferred model here because emitter terminal is not grounded. So let's choose the T model here, alpha IE, RE, this is IE, this is the base terminal, this is the collector terminal, this is the emitter terminal. And again to save some time I'm doing this analysis without early effect, लेकिन आपने early effect के साथ भी practice करनी है. हमने कुछ problems पहले early effect के साथ भी की हैं, उससे थोड़ा सा काम बढ़ जाता है but it is perfectly doable. So do some practice with early effect. So अब आप टर्मिनल पे टर्मिनल चलते जाएं. मीटर पे आप देखें यहाँ पर RL कनेक्टेड है तो हमने मीटर पे RL कनेक्ट कर दिया. बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल थेवेनिन इक्विवेलेंट कनेक्टेड है ऑफ द सिग्नल सोर्स कंप्राइजिंग ऑफ R सिग्नल एंड V सिग्नल, तो वो हमने कनेक्ट कर दिया. कलेक्टर टर्मिनल इज ग्राउंडेड, सो ग्राउंड द कलेक्टर. V out is defined at across the load and input is applied at the base terminal with respect to the ground. So this must be Vi. So let's now start by determining the input resistance. So input resistance को निकालने का तरीका ये है कि आप input voltage Vi को divide करें input current In से. So for that purpose we replace the practical source comprising of this Thevenin equivalent R signal V signal, and instead of the Thevenin equivalent we apply a test source. And since this node is already given a name, so हम इस test source को भी Vi ही कह देंगे because हमने इस input port पे जो voltage apply की हुई है उसको already एक नाम दिया हुआ है Vi. And we need to determine this current in terms of this Vi. So let's start by applying KCL at this node. KCL अगर आप base node पे KCL apply करें, KCL at base, one can see that there are two currents entering the node, In and alpha IE are the two currents entering this node, and one current is exiting the node which is IE. So the two currents entering the node are In and alpha IE, and one current exiting the node is this emitter current IE. So rearrange the terms, alpha IE को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, we get IE 1 minus alpha. 1 minus alpha can be written as 1 minus beta by beta plus 1 because by definition alpha is beta by beta plus 1. So beta plus 1 को common ले लें, so ये betas cancel out हो जाएंगे, and we have determined that 1 minus alpha can be written as 1 by beta plus 1. So let's make this substitution. So we get IE divided by beta plus 1, and अब IE को हमें एक्सप्रेस करना है किसी तरीके से Vi की टर्म्स में, which we can do because IE is the current through this series combination of two resistors, small re and capital RL, और इस series combination के across जो voltage आ रही है वो आपके पास Vi है. So by Ohm's law we have a solution by Ohm's law. IE can be written as Vi divided by small re
plus capital RL. So I in is, यहाँ पर let's make the substitution here. We get VI divided by beta plus 1 times small re plus capital RL. इसको just मैंने यहाँ पर substitute कर दिया, IE की वैल्यू को इधर substitute कर दिया. We get II is equal to VI divided by beta plus 1 times RE plus capital RL. So which implies that Rin, which is defined as VI divided by I in, is beta plus 1 times small re plus capital RL. So ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई. तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर चूंकि बीटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट इज़ अ लार्ज वैल्यू. तो जो पहली हमारी रिक्वायरमेंट थी फॉर अ वोल्टेज बफर कि आर इन नीड्स टू बी लार्ज, दैट रिक्वायरमेंट इज बीइंग फुलफिल्ड हियर, क्योंकि यहाँ पर बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सम ऑफ टू रेजिस्टर्स के साथ. सो आर इन आपको रीजनेबली लार्ज मिलेगी. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट हैज़ बीन फुलफिल्ड फॉर अ वोल्टेज बफर. दूसरी चीज आप नोट करें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस लुकिंग इन टू द बेस इज बीटा प्लस 1 टाइम्स द रेजिस्टेंस इन द एमीटर. दिस इज द सो कॉल्ड, तो ये इसको हम रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल, दैट द रेजिस्टेंस लुकिंग इन टू द बेस टर्मिनल इज ऑलवेज बीटा प्लस 1 टाइम्स द रेजिस्टेंस इन द एमीटर टर्मिनल. तो एमीटर टर्मिनल में इस सीरीज में दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं. ये रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है एमीटर टर्मिनल में देखते हुए इस तरीके से. और जब आप बेस में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इट विल मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1. वाई? बिकॉज आई बी इज ऑलवेज आई ई डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1. सो दैट्स वाई रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल जो है आपको बताता है कि सिंस करंट इस तरीके से रिलेट कर रहा है, बेस करंट इज रिलेटेड टू एमीटर करंट बाय दिस रिलेशन, सो द रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस टर्मिनल मस्ट बी रिलेटेड again by beta plus 1 to the resistance looking into the emitter terminal. So this is called a resistance reflection rule. तो पहली चीज हमने निकाल ली, आर इन हमने निकाल ली, हमने देख लिया कि yes आर इन इज लार्ज which is desirable for a voltage buffer. So let's now determine next चीज निकालते हैं AV, the gain. So AV निकालते हैं, AV is V out over VI. सो इस कॉमन कलेक्टर टोपोलॉजी में वी आउट ओवर वी आई निकालना बहुत इजी है, क्योंकि आप नोट करें तो वी आउट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर आर एल एंड वी आई इज द वोल्टेज अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स स्मॉल आर ई एंड कैपिटल आर एल. और ये चूंकि सीरीज में कनेक्टेड हैं, दोनों के थ्रू एक ही करंट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस आपको वोल्टेज अवेलेबल है वी आई है, और एक रेजिस्टर के क्रॉस भी आपको वोल्टेज अवेलेबल है जो कि वी आउट है. So it's just a matter of applying a voltage divider here to determine V out over VI. So V out over VI by means of voltage divider can be written as capital RL divided by RL plus small re. So AV आपने देखा कि AV is very straightforward. It's just a matter of applying voltage divider here. Since we know the voltage across RL, also we know the voltage across the series combination of the two resistors small re and capital RL. So AV आपने readily निकाल लिया. AV नॉट अब आपने निकालना है. AV नॉट निकालने का क्या तरीका है? AV नॉट is just AV with RL replaced by an open circuit. तो देखिए यहाँ पर अगर आप ये लिमिट पुट करते हैं infinity, तो we are saying कि a very large number is being divided by a very large number plus a small increment. So this limit should approach to 1. Alternatively, mathematically देखने के लिए you just divide numerator and denominator by RL. So you can rewrite this as 1 plus RE divided by capital RL. यहाँ पर देखिए अगर आप RL को infinity put करेंगे तो this will reduce to 0 and AV naught will be equal to 1. So ये second जो desirable property थी कि gain AV naught must be approaching to 1 for a voltage buffer, वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली AV नॉट 1 आया है. इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर अर्ली इफेक्ट के बगैर काम किया. तो अभी आप अर्ली इफेक्ट के को इंक्लूड करके जब ये वर्किंग करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि AV नॉट विल बी क्लोज टू 1 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1. सो AV नॉट विल बी अप्रोचिंग टू 1 इन दैट केस एज वेल, एंड दैट विल बी द मोर प्रैक्टिकल सिनेरियो. सो AV आ गया आपके पास, AV नॉट आ गया, R in आ गया.
Now we can determine the overall gain GV, which relates V out to V signal and can be written as Vi over V signal times V out over Vi. Or it can be written as by voltage divider in the input Rin divided by R signal and V out over Vi is AV. तो यहाँ पर जो हमने वर्किंग की है Rin जो हमने निकाला है वो हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं बीटा प्लस वन स्मॉल Re प्लस कैपिटल RL डिवाइडेड बाय बीटा प्लस वन स्मॉल Re प्लस कैपिटल RL प्लस R सिग्नल AV को सब्सटीट्यूट कर दें AV हमने निकाला है RL divided by RL plus small re. So ये आपके पास overall GV आ जाएगा इस केस में. So GV के केस में you have the effect of the input voltage divider and this जो output का voltage divider है वो भी यहाँ पर आ रहा है and this will give you the overall gain between V out and V signal which is called GV. So now you can see that we have determined the input resistance Rin. We have determined the three types of gains in which we were interested: AV, AV0, and GV. So the only entity left to be determined is capital R0, the output resistance of this amplifier. So let's redraw the circuit and determine this capital R0. So we have, this is the small signal equivalent circuit, IE, alpha IE, base, collector, emitter, emitter के ऊपर we have RL, base के ऊपर we have a test source VI, collector is grounded. So ये आपका सर्किट है. इस सर्किट की हम अब एनालिसिस करना चाह रहे हैं कैपिटल R0 के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो कैपिटल R0 निकालने के लिए हमारी क्या मेथडोलॉजी थी? द फर्स्ट स्टेप वाज टू रिमूव RL, replace RL by an open circuit, and instead of RL apply a test source. तो RL की जगह पे आपने एक टेस्ट सोर्स अप्लाई कर देना है. RL को हटा देना है, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है और उसकी जगह पे एक टेस्ट सोर्स अप्लाई कर देना है. And let's call this test source Vx, and we are interested in determining the current of that test source. Call it Ix. So R0, capital R0 is Vx divided by Ix, where Vx is a test source applied instead of the load resistance RL. और एडिशनल स्टेप आपने क्या करना है, आपने बकिया इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सप्रेस करना है, वो आपका Vi है. सो Vi को आपने 0 भी सेट करना है. So this is the additional step that we must do as well. So यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इस एमीटर के ऊपर KVL अप्लाई करें, सॉरी KCL अप्लाई करें, KCL at the emitter terminal, there is one current entering the node and there is another current also entering the node. So there are two currents entering the node here, Ix plus IE, and there is no current exiting the node, must be equal to 0, or Ix must be equal to minus IE. By Ohm's law and the passive sign convention, one can see that IE can be written as, यहाँ पर अब आप बेस के ऊपर 0 वोल्ट है because Vi has been suppressed, 0 minus Vx divided by Re, or IE is equal to minus Vx divided by Re. So make the substitution here, we get Ix is equal to Vx divided by Re, or Vx by Ix, which by definition is capital R0, must be equal to small re. And since small re is typically in tens of ohms, so we can safely conclude that the capital R0 is equal to small re is a small value. So ये एक small value आ गई है. So you can notice that the third requirement of the voltage buffer, that R0 needs to be small, is also being satisfied for this common collector topology. So इस common collector topology में third requirement भी हमारी meet हो रही है. So all the three requirements, Rin needs to be large, AV0 needs to be approaching to 1, and capital R0 needs to be small, are being satisfied for this common collector or emitter follower topology. So that's why we safely conclude that the emitter follower or the common collector amplifier is basically a voltage buffer. जी ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? एज अ होमवर्क आपने इसको अर्ली फेट के साथ अटेम्प्ट करके देखना है
एंड उसमें क्या एडिशनल स्टेप्स लगते हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स हैव अ कंपैरिजन। ये जो हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की एनालिसिस की है, सो लेट्स टेक अ लुक एट द कंपैरिजन ऑफ दिस एनालिसिस एंड सी कि ये किस तरह से कंपेयर करते हैं। सो वी हैव एनालाइज्ड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, common emitter with RE, common base, and emitter follower, also called common collector amplifier topology. So अगर आप कॉमन एमिटर के केस में देखें तो कॉमन एमिटर के केस में इनपुट रेजिस्टेंस जो हमारे पास आई थी बीटा प्लस 1 टाइम्स RE, द गेन इज नेगेटिव। सो इनपुट रेजिस्टेंस इज नॉट वेरी स्मॉल, इज रीजनेबल कह लें, एंड गेन आपको मिलता है, नेगेटिव गेन मिलता है माइनस GM/RC। इफ इनपुट रेजिस्टेंस में फर्दर इन्हेंसमेंट चाहिए तो यू कैन यूज दिस वेरिएशन ऑफ कॉमन एमिटर कॉल्ड कॉमन एमिटर विद RE, जहाँ पर यू गेट लार्जर वैल्यू ऑफ Rin डिपेंडिंग ऑन कैपिटल RE आपने क्या चूज़ किया है, ये आपके कंट्रोल में है, आप अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैच क्या है, आप किस चीज़ के एक्सपेंस पे ये इन्हेंसमेंट इन गेन अचीव, इन्हेंसमेंट इन इनपुट रेजिस्टेंस अचीव करेंगे, वो गेन। So in this topology, common emitter with RE, you achieve larger value of Rin at the expense of smaller gain. So this topology provides us with a lot of flexibility, but that flexibility comes at a cost, and the cost is that you will have to get by this decrease in the gain. So you achieve more input resistance at the expense of gain. So common emitter topology और common emitter with RE में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं लेकिन गेन की प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। देन यू हैव कॉमन बेस टोपोलॉजी। कॉमन बेस टोपोलॉजी में Rin is small, so that's why common base is not very desirable at low frequencies. However, common base topology finds application at high frequencies where all the impedances are already small, typically 50 ohms or 75 ohms. So as a consequence, common base की जो main application है वो high frequency circuits हैं। Common base के केस में the gain is positive, so you get a positive gain for common base topology. Emitter follower या common collector amplifier के केस में you get large value of input resistance, you get gain AV0 approaching to 1, you get capital R0 very small. So as a consequence, emitter follower या common collector amplifier find application as a voltage buffer. So इसकी main application as a voltage buffer. So as a voltage buffer, it finds mainly the main application of common collector topology is as a voltage buffer. So ये हमारी एनालिसिस थी इन पर्टिकुलर सर्किट्स की और ये उसका हमने कंपैरिजन किया। नोट करें कि ये कंपैरिजन कोई जेनेरिक नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी बायसिंग स्कीम क्या है और उसकी बेसिस पे आपने AC इक्विवेलेंट सर्किट क्या ड्रॉ की है। तो ये जो भी हमने AC इक्विवेलेंट सर्किट्स ड्रॉ किए थे, these are not the only available options. अभी आगे हम बायसिंग स्टार्ट करने लगे हैं। So depending on the biasing scheme at hand, overall amplifier topology may be different. यहाँ पर जस्ट आपको एक रेजिस्टर RC नजर आया था, आपको एडिशनल कोई बायसिंग की वजह से भी रेजिस्टर्स may be there in the AC equivalent circuit. So ये रिलेशंस आपने कोई इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपने याद करना है, आपने एक्चुअल एनालिसिस करनी सीखनी है और उस एनालिसिस के बेसिस पे for the given circuit you should be able to determine all these quantities for the given circuit by using this generic analysis method. ये जस्ट हमने एनालिसिस की है तो एक टेबल में हमने कंपैरिजन कर ली है to have some idea कि इन डिफरेंट टोपोलॉजीज का क्या कंपैरिजन है और क्या की एप्लीकेशंस हैं। So common emitter and common emitter with RE find application as the main gain stages at low frequencies. For example, अगर आप audio amplifier डिजाइन कर रहे हैं, so these will be the main stages that you will choose. अगर आप high frequency circuits बनाना चाह रहे हैं तो common base is the main option. So common base topology will give you a positive gain and at high frequencies it has a good frequency response, a wideband response, जो कि हम next semester में देखेंगे कि इसका क्या meaning है. So at high frequencies common base is the suitable topology. और अगर आप voltage buffer के application में interested हैं तो उस केस में emitter follower is the topology of choice जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। So ये expressions आपने याद नहीं करनी, ना याद करने की कोशिश करनी है, आपने जो जेनेरिक मेथड एनालिसिस का वो आपने समझना है कि वो कैसे आप करेंगे और वो एनालिसिस कैसे की जा सकती है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है
और डिपेंडिंग ऑन द बाइसिंग स्कीम एट हैंड ये एक्सप्रेशंस डिफरेंट आएंगे। की कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल कॉमन एमिटर के केस में यू विल गेट ऑलवेज अ नेगेटिव गेन, कॉमन बेस के केस में यू गेट अ पॉजिटिव गेन, कॉमन बेस के केस में आपको स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगी, एमिटर फॉलोअर के केस में आपको लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगी। Key characteristics will be the same, but these expressions will be different depending on the DC biasing scheme that you're using for a particular amplifier topology. So अभी next हम DC biasing की तरफ जाएंगे and we'll see कि क्या practical options हैं आपके पास to achieve DC biasing of practical BJT amplifier circuits. जी any questions up till now? नो सर। So let's now see कि हम practical biasing किस तरह से करते हैं। तो बाइसिंग के प्रॉब्लम का क्या मतलब है? एज वी ऑलरेडी नो कि बीजेटी को जब आपने एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो द फर्स्ट थिंग इज दैट बीजेटी हैज टू बी बाइस्ड इन एक्टिव मोड। एक्टिव मोड इज द वन वेयर यू गेट सम गेन, सम एम्पलीफिकेशन। अगर आप कट ऑफ चूज करते हैं तो इनपुट सिग्नल ट्रांसलेट ही नहीं होता आउटपुट पे, और अगर आप सैचुरेशन चूज करते हैं तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ मैग्नीफाइड रेप्लिका ऑफ द इनपुट सिग्नल यू गेट एन अटेन्यूएटेड वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल। So the only mode of choice for an amplifier application is the active mode. So biasing problem का मतलब ये है कि आपने एक suitable bias point या DC operating point choose करना है in the active mode for the given BJT. So आपने DC values of current and voltages आपने ऐसे set करनी है कि वो आपको एक अच्छा bias point मिल जाए। अच्छे bias point का मतलब ये है कि आपको उस पर reasonable gain भी मिल जाए और positive swing और negative swing भी मिल जाए। So this step is called the bias design or just DC biasing. So an appropriate bias point or DC operating point का मतलब ये है कि you get a stable and a predictable DC collector current IC and hence VCE. So ये IC को change नहीं होना चाहिए आपके, यानी practically speaking there will be a change in temperature, there will be a change in beta जो कि भी हम आगे बात करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही होंगी, उनके अगेंस्ट what you want is you want a stable and a predictable IC. Why it's important कि IC आपका stable and predictable हो? रिकॉल करें कि तमाम स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर्स की वैल्यू इस IC पे डिपेंड करती है। GM is IC over VT, RE is alpha over GM, R pi is beta over GM, and small r naught is VA divided by IC. So all these small signal model parameters are determined by the value of capital IC. और इसकी बेसिस पे इन स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर्स की मदद से आप स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाते हैं। स्मॉल सिग्नल मॉडल की मदद से आप स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं और स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट की एनालिसिस करके आप ये एम्पलीफायर पैरामीटर्स निकालते हैं, right? So what I am emphasizing here is consider now the case कि IC is changing with temperature. IC अगर temperature के साथ change हो गया तो that means कि तमाम small signal model parameters की values change होगी। अगर ये तमाम small signal model parameters की values change होगी तो then these amplifier parameters जो amplifier की performance को indicate कर रहे हैं, उसकी input resistance क्या है, उसका gain क्या है, उसकी output resistance क्या है, they will change drastically as well. So अगर IC change हो जाता है किसी भी वजह से तो small signal model parameters change हो जाते हैं, and as a consequence of that all the performance parameters of the resulting amplifier will change drastically as well. तो अगर आपने ख्याल नहीं किया कि टेम्परेचर के साथ आपका IC स्टेबल है तो क्या होगा कि विंटर में एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, समर में एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस इंटायरली डिफरेंट होगी। सो समर में उसकी इनपुट रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, उसके गेन्स डिफरेंट होंगे, उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस विल बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम the overall performance of that amplifier in the winter season. So this is a problem. टेम्परेचर ने तो चेंज होना है, यू कांट इम्पोज दिस रेस्ट्रिक्शन कि यार पहले आप टेम्परेचर इंश्योर करें कमरे का और उसके बाद मोबाइल फ़ोन को ऑन करें। So you can't impose such restrictions on the user. So you have to design the circuit to incorporate these
चेंजेस इन टेम्परेचर। सिमिलरली जो दूसरी की चेंज है वो आपके बीटा की चेंज है, बीटा चेंजेस फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। सो अगर आप किसी भी बीजेटी की डेटा शीट को खोल के देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि बीटा की कोई रेंज उसने दी होगी। मैन्युफैक्चरर कैन ओनली इंश्योर बीटा इन अ सर्टेन रेंज। फॉर एग्जांपल 80 से 150 उसने कहा है कि यार ये मेरी मिनिमम वैल्यू है बीटा की और ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू 150। तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर कैन ओनली इंश्योर कि बीटा इज ऑलवेज इन दिस रेंज। लेकिन जो आपने पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर उठाया है और लैब में उसको कनेक्ट करके देखा है, उसका आपने अगर एक्सपेरिमेंटली उसका बीटा निकाला है तो इट विल बी समवेयर इन दिस रेंज। दिस इज द ओनली गारंटी दैट मैन्युफैक्चरर इज प्रोवाइडिंग यू, इट विल बी समवेयर इन दिस रेंज। दिस इज ओनली व्हाट हैज बीन इंश्योर्ड। सो एक पर्टिकुलर आपने लेट्स से सेम पार्ट नंबर का एक बीजेटी 1 आपने उठाया, उस पर आपने सर्किट बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, उसका बीटा निकाला आपने, तो आपने फाइंड आउट किया कि यार ये 90 है। एक और बीजेटी आपने उठाया सेम पार्ट नंबर का और उसको आपने देखा तो मे बी उसका बीटा 140 हो। सो अगर आपने कोई एक दो कॉपीज बनानी है तो इट्स फाइन, आप सर्किट को थोड़ा सा ट्यून कर सकते हैं, आप पैरामीटर्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं एंड गेट द परफॉर्मेंस विद बोथ दीज बीजेटीज। सो अगर एक या दो कॉपीज बनानी है तो देन दिस अप्रोच इज ओके। लेकिन अगर आपने मल्टीपल कॉपीज बनानी है, इमेजिन कि आपने 50 कॉपीज बनानी है सेम सर्किट की, सो यू डोंट रियली वांट कि आप हर सर्किट को ट्यून करना शुरू कर दें, हर सर्किट के पैरामीटर्स को एडजस्ट करना शुरू कर दें, उसमें वेरिएबल सर्किट वेरिएबल रेजिस्टर्स आप लगाएं और हर एक को एडजस्ट करें and achieve the desired performance. This is not desirable when mass production is being carried out. For example, let's say आपने उसके 1000 copies बनानी है, so it is really it will get very expensive कि आप हर एक को manually tune करें. So the more practical approach, the more viable approach is कि आप instead of this आप इस range को already accommodate करें अपनी design methodology में, because this restriction is there. You can't wait for an ideal device. आपको यार पहले ideal device आएगी जिसका बीटा perfect होगा तो then I will make some usable circuit from that. जो डिवाइस के restrictions हैं वो आपको पता है, बीजेटी के ये constraints हैं, बीटा has to vary within a certain range. तो उस range को आप accommodate करेंगे and then that would be more viable solution. कुछ cases में जिस तरह integrated circuit application है, for example आपकी cell phone की application है, इसमें millions of transistors हैं, so you can't ट्यून ईच एंड एवरी सर्किट, वो वाइबल है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। सो तो इन केस ऑफ mass production when you are producing multiple circuits, so to ensure device to device repeatability, this change in beta must be accommodated in the design procedure. So हमने जो मेन बात यहाँ पर हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो ये है कि यू नीड अ स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल डीसी कलेक्टर करंट. The DC collector current must be stable and predictable and must be fixed in spite of the changes in temperature, in spite of the variations in beta from device to device. So ये आपने इंश्योर करना है, क्योंकि अगर आप ये इंश्योर नहीं करेंगे तो the overall amplifier will have drastically different performance for different temperatures and will not be repeatable. The design will not be repeatable. आप उसकी 50 कॉपीज बनाते हैं, हर कॉपी ज़रा डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी एंड यू हैव टू मैनुअली ट्यून देम व्हिच इज ऑफ्टन नॉट पॉसिबल इन अ प्रैक्टिकल सेटिंग. सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स हियर. और कि टेम्परेचर की वेरिएशन आनी ही आनी है और डिवाइस रिपीटेबिलिटी हैज़ टू बी देयर. यूजुअली आपने उसकी एक ही कॉपी नहीं बनानी होती, आपने मल्टीपल कॉपीज बनानी होती हैं. सो यू वांट अ रिपीटेबल डिज़ाइन जिसकी जब आप कॉपीज बनाएं, जब भी आप उसकी प्रोडक्शन करें तो ऑल द कॉपीज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू the required according to the requirements. So ये concerns हैं यहाँ पर. So we need to choose a biasing scheme that provides us with a stable and predictable DC collector current IC. So that is the main idea here. So let's now see कि क्या हमारे पास biasing की options हैं. So जो दो obvious biasing के ideas हमारे पास आते हैं वो हैं biasing by fixing VBE and biasing by fixing IB. So biasing by fixing VBE will use the relation IC is equal to IS exponential of VBE by VT, and biasing by fixing IB will use the relation IC is equal to beta IB. ये दो बहुत obvious तरीके हमारे ध्यान में आते हैं. So ये सबसे easy तरीके हैं biasing करने के. तो पहली चीज पे जरा फोकस करें. Do you see some problem here? क्या ये जो अभी हमने इशू मेंशन की है
कि टेम्परेचर की वेरिएशंस के साथ आईसी शुड बी स्टेबल। तो क्या ये, अगर ये तरीका हम चूज़ करें और इस इक्वेशन के बेसिस पे वीबीई को फिक्स करके बायसिंग अचीव करने की कोशिश करें, तो विल इट सॉल्व दैट प्रॉब्लम? व्हाट डू यू थिंक? सर वीटी नहीं वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ? एग्जैक्टली, वीटी भी वेरी करता है आपका टेम्परेचर के साथ, और आईएस भी वेरी करता है। आईएस के लिए रिकॉल करें, हमारे पास एक रूल ऑफ थंब भी था, आईएस डबल्स फॉर एवरी 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो ये दोनों पैरामीटर सिग्निफिकेंटली वेरी करेंगे टेम्परेचर के साथ। सो अगर हम ये चूज करें तो इट्स नॉट अ वेरी गुड डिजाइन, because the resulting IC will vary significantly with temperature. So there is a problem here. This is not a valid approach, although it's very easy to implement, but as far as the temperature changes are concerned, this will not give us a good stable collector current. So this is not a very practical way of biasing the BJT. एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आईएस तो हमारे पास इंक्रीज करेगा, लेकिन जो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ये तो डिक्रीज करेगी, तो वो इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा टू सम एक्सटेंट? एग्जैक्टली कैंसल आउट नहीं होता वो इफेक्ट। आईसी इसमें अगर आप प्रैक्टिकली करके देखें तो आईसी विल चेंज। एग्जैक्टली वो यानी सेम नहीं है, सेम सेम तरीके से वो चेंज नहीं होगा। सो आईसी विल चेंज। अगर आप इस बाइसिंग स्कीम को चूज करते हैं तो ये एक्चुअली इस बाइसिंग स्कीम को अगर आप चूज करेंगे तो आईसी विल चेंज एज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आप रिकॉल करें तो हमने यहाँ पर एक्चुअली इस पूरी चेंज के लिए हमने एक रूल ऑफ थंब एक और भी देखा था कि वीबीई चेंजेस बाय 2 मिली वोल्ट। अगर आईसी को आप फिक्स्ड रखें तो वीबीई चेंजेस बाय 2 मिली वोल्ट, कोई इस तरह का भी रूल ऑफ थंब था अगर आप रिकॉल करें विद टेम्परेचर। तो वो रूल ऑफ थंब जो है उस चीज़ को अकोमोडेट करता था। यहाँ पर आप उसे ऑपोजिट कर दें कि अगर आप वीबीई को फिक्स कर रहे हैं तो वीबीई के वो जो 2 मिली वोल्ट के साथ चेंज हो रहा था आईसी, उस केस में हमने आईसी को फिक्स रखा था, फोर्स किया था यूजिंग सम कांस्टेंट करंट सोर्स, और वीबीई की चेंज को देख रहे थे, तो इसको आप ऑपोजिट कर सकते हैं। सो द कंक्लूसिव पॉइंट इज कि आईसी विल चेंज विद टेम्परेचर अगर आप ये बाइसिंग स्कीम चूज करते हैं। तो उसको एग्जैक्टली देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी कर सकते हैं, या इसको सिमुलेशन में एग्जैक्टली देख के उसका ट्रेंड देखा जा सकता है। बट द कंक्लूसिव आर्गुमेंट इज कि आईसी विल चेंज हियर, एंड दैट प्रेजेंट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट दिस? अगर ये बाइसिंग टोपोलॉजी चूज करें तो इस केस में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या ये वायबल अप्रोच है? जी, क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या ख्याल है? सर इसमें बीटा की वेरिएशन? इसमें बीटा की वेरिएशन प्रॉब्लम है, क्योंकि बीटा वी नो कि बीटा विल बी वेरिंग इन सर्टेन रेंज प्रोवाइडेड इन द डेटा शीट। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस आईसी विल वेरी ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन बीटा, क्योंकि इस केस में आप आईबी को फिक्स कर रहे हैं, सर्किट में आपने अरेंजमेंट रखी हुई है जिससे आईबी फिक्स्ड रहे, और यू आर थिंकिंग कि शायद बीटा फिक्स्ड है, तो बीटा फिक्स्ड नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वैलिड अप्रोच एज वेल। सो बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस will not compensate for the changes in temperature and beta variations. So the first one has a problem with the temperature and the second one has the problem with device to device repeatability. अगर आपने जस्ट एक ही कॉपी बनानी है तो then it might be okay कि आप उसका पर्टिकुलर बीटा निकाल लें, उस ट्रांजिस्टर का एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर लें और आईसी को सेट कर लें। बट यूजुअली दैट इज़ नॉट द केस। यूजुअली आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी होती हैं जो भी सर्किट आपने फाइनलाइज की है। So device to device repeatability की terms में this is not a valid approach. So we are saying कि two obvious biasing schemes जो mind में आती हैं, biasing by fixing VBE and biasing by fixing IB, they will not work. Why they will not work? Because they both will lead to large variations in IC and hence large variations in small signal model parameters, and as a consequence large variation in amplifier performance, namely Rin, capital R naught, and AV naught, AV and GV. So as a consequence, these two biasing schemes are not recommended for practical amplifier applications. Nevertheless, for the sake of argument, let's still take a look कि अगर आपने बनानी हो practically तो आप कैसे बना सकते हैं। So biasing by fixing VBE को implement करना is very easy. आप इस तरह से दो resistors लगा सकते हैं RB1 and RB2 और उसकी मदद से VBE को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर टू इंश्योर के IB की चेंज या बीटा की वेरिएशन इस
VBE की वैल्यू को वेरी ना करे, इस IRB2 को आप significantly large रखेंगे, IRB2 will be significantly large than IB. So if IRB2 is significantly large than IB, then IB की जो भी changes होंगी because of beta, that will not impact this value of VBE. So इस तरीके से आप just RB1 और RB2 को डिज़ाइन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं एक डिजायर्ड VBE के लिए इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट अगेन with changes in temperature, this circuit will cause problems. It will lead to a significant change in the collector current. बाइसिंग बाय फिक्सिंग IB को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके लिए ये सर्किट यूज किया जा सकता है. यहाँ पर आप देखिए बाय ओम्स लॉ दिस IB, ये करंट IB है, इज इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB. यहाँ पर देखें VBE ने चेंज होना है टेम्परेचर के साथ, तो VBE की चेंज को अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो यू विल चूज VCC वेरी मच ग्रेटर देन VBE. सो VCC अगर बहुत ग्रेटर है VBE से, तो VBE की चेंजेस की वजह से IB विल नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली. हाउएवर सिंस IC इज इक्वल टू बीटा IB, सो बीटा की जो वेरिएशन है इट विल प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हियर. सो यहाँ पर दिस सर्किट वी हैव रिजेक्टेड दिस सर्किट बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन बीटा rather than the variations in VBE which are caused by temperature changes. So यहाँ पर बीटा के वेरिएशंस की वजह से this circuit is not a viable choice for practical applications. So दो सर्किट्स अभी तक हमने देखे हैं और दोनों को रिजेक्ट कर दिए. So we said के दो obvious schemes हमारे माइंड में आई, बाइसिंग by fixing VBE and बाइसिंग by fixing IB. We have rejected both of them because both leads to wide variations in IC and hence are not very viable options for practical BJT amplifiers. So the obvious question is कि ठीक है ये दोनों options तो rejected हैं, तो practical options क्या हैं, क्या क्या possibilities क्या हैं आपके पास जिनको आप practically use कर सकें to get stable bias point. So we have 4 possible options that we can utilize for practical BJT amplifier designs. The first one is called the classical discrete circuit bias arrangement. बहुत popular है, बहुत common है, use करते हैं, just requires a single power supply. The second is the 2 power supply version of the classical bias arrangement. If you have 2 power supplies available, one positive and one negative, then this second arrangement may be utilized. The third arrangement is using a collector to base feedback resistor. So here you make use of a feedback resistor which is connected between collector and base terminals and achieve the resulting biasing. And the fourth option is suitable for integrated circuit implementation and is called biasing using a constant current source. So constant current source can be implemented by making use of 2 BJTs, जो कि भी हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह से पॉसिबल है. So constant current source किस तरह बनता है ये अभी तक आपने नहीं देखा, but now we will, since we know कि BJT क्या चीज़ है, BJT को भी हमने स्टडी कर ली है, तो now we will establish के 2 BJTs की मदद से किस तरह से constant current source को implement किया जा सकता है. So this is the biasing scheme of choice for integrated circuit applications. So this is used in integrated circuit applications, and the other 3 are suitable for discrete circuit implementations. Discrete circuit, as you know, means के आपने अलग-अलग पैकेज्ड डिवाइसेस ली हैं, अलग पैकेज ट्रांजिस्टर है आपके पास, अलग पैकेज रेजिस्टर है, अलग पैकेज कैपेसिटर है, उनको आपने इंटरकनेक्ट किया ऑन अ वेरो बोर्ड थ्रू वायर्स और ऑन अ PCB और ऑन अ ब्रेडबोर्ड. जिस भी चीज़ पे आपने इम्प्लीमेंट किया, अलग डिस्क्रीट डिवाइसेस थी आपके पास जिनको आपने कनेक्ट अप किया और एक सर्किट फंक्शनैलिटी अचीव की है. सो द फर्स्ट 3 बाइसिंग स्कीम्स आर सुटेबल फॉर सच डिस्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आप लैब्स में करते हैं. However, the fourth one is suitable for integrated circuit application. Integrated circuit के केस में आप एक ही वेफर के ऊपर हर चीज़ एक ही गो में बना देते हैं. तमाम ट्रांजिस्टर्स, तमाम रेजिस्टर्स, तमाम कैपेसिटर्स आपने एक ही गो में इन अ फाउंड्री आपने तमाम इम्प्लीमेंट कर देनी है और तमाम इंटरकनेक्शन भी आपने उसी गो में अचीव कर लेनी है. सो उसका बेनिफिट ये है कि आप बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक स्मॉल एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. However, it has to be done in a single go. So उस केस में the preferred topology is
यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं और देखते हैं कि ये चार टोपोलॉजीज जो हैं ये किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो भी हमने मेंशन की हैं कि आपने क्या टेम्परेचर की भी वेरिएशन एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से VBE चेंज होता है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस IC चेंज होता है, और आपकी बीटा की वेरिएशंस भी एग्जिस्ट करती हैं इन अ प्रैक्टिकल डिवाइस, और एज अ कॉन्सिक्वेंस यू डोंट गेट डिवाइस टू डिवाइस रिपीटेबिलिटी। सो लेट्स चेक कि ये चार जो प्रैक्टिकल ऑप्शंस हम कह रहे हैं ये किस तरीके से इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, द क्लासिकल डिस्क्रीट सर्किट बायस अरेंजमेंट। तो ये टोपोलॉजी है। अगर आप रिकॉल करें जो भी बायसिंग बाय फिक्सिंग VBE हमने बनाई थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, जस्ट अगर आप नोट करें तो बायसिंग बाय फिक्सिंग VBE के केस में हमने कहा था कि ये टोपोलॉजी है। सो इफ़ यू कंपेयर द टू, सो द ओनली डिफरेंस इज दिस RE। सो इस RE की वजह से हम कह रहे हैं कि इस टोपोलॉजी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है एंड गिव्स अस a viable practical implementation for biasing। तो ये स्कीम अभी आप रिकॉल करें जो भी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी की थी, तो ये बायसिंग बाय फिक्सिंग VBE की स्कीम थी। यहाँ पर आप इस R1 R2 को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इस करंट IB का इफेक्ट कम से कम हो और ये R2 की वोल्टेज फिक्स्ड रहे, लेकिन यू आर फिक्सिंग VBE हेयर, दिस इज VBE। जबकि यहाँ पर आप नोट करें तो एक्चुअली आपने R1 R2 की मदद से VB को फिक्स किए, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग VBE यू आर फिक्सिंग VB here and we are claiming that this will give us a more stable point। So let's first think qualitatively कि why this is solving this problem और फिर हम इसकी इक्वेशन की तरफ आते हैं। ये देखिए यहाँ पर this is the current IE and this is VBE, right? So VB is fixed, we are saying कि VB is fixed, VB को हमने किसी फिक्स वैल्यू पे लॉक कर दिए। By KVL VB can be written as VBE plus IE RE, right? इस तरह लिख सकते हैं by KVL। अब बिफोर प्रोसीडिंग यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, चूंकि हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि IC को हमने स्टेबल रखना है, IC को हमने स्टेबल और प्रिडिक्टेबल वैल्यू पे रखना है। सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में IE आ गए। सो IE रिकॉल करें, IE इज IC over alpha, or IC is equal to alpha IE। Now consider the case जहाँ पर beta is varying between let's say 50 से 150 तक वेरी कर रहा है, तो अल्फा कितना वेरी करेगा? अल्फा विल वेरी बिटवीन 0.9804 एंड 0.9934। So what I am emphasizing here is कि बीटा की ऑल्दो ड्रास्टिक वेरिएशन है, बीटा की एक सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, बट अल्फा की वेरिएशन इज वेरी स्मॉल। अल्फा की वेरिएशन इज वेरी स्मॉल। व्हाई आर वी एम्फसाइजिंग ऑन दिस फैक्ट कि अल्फा की वेरिएशन इज स्मॉल? बिकॉज IC is related to IE through this alpha। So what we are concluding here is कि IC को स्टेबल करने का मतलब ये है कि आपने IE को स्टेबल कर दिया एंड वाइस वर्सा। So if you stabilize IE, that is equivalent to saying IC has also been stabilized। Why? Because alpha की variation is quite small. In spite of a large variation in beta, alpha variation is very small. So if you ensure that IE is stable, that is equivalent to saying that IC is stable as well। So it's fine अगर हम IC के बजाय IE की बात कर लें, क्योंकि IE को stabilize करने का मतलब ये है कि IC automatically stabilize हो गया। So this is the constraint that we are imposing in this new circuit, and we are saying that it is solving our problem। So let's see qualitatively how is this circuit going to solve the problem। Imagine for any reason, for temperature raise or whatever, this current IE is tending to increase। So if IE is tending to increase, that means the product IE RE will tend to increase, but VB is fixed। So that means that VBE is equal to VB minus IE RE। और हम कह रहे हैं कि किसी वजह से IE RE is tending to increase, but since VB is fixed and VBE is VB minus IE RE, so that means कि VBE will tend to decrease। और VBE जो है अगर डिक्रीज कर रहा है तो it will try to negate this change
ये जो चेंज आई थी IE में, इट विल ट्राई टू नेगेट दिस चेंज एंड विल इन टर्न ट्राई टू रिड्यूस IC। तो इस तरह का एक फीडबैक सा एग्जिस्ट कर रहा है इस सर्किट में। सो वी आर सेइंग कि बिकॉज VBE will tend to decrease, so as a consequence it will try to decrease the overall current. So there is a mechanism here, because VBE is fixed, there is a mechanism available in the circuit which is negating the change in IE. So IE की change अगर किसी भी वजह से हुई है तो VBE will try to cancel out that change, will try to negate that change. So there is a sort of a negative feedback that exists in this circuit, and it will tend to stabilize the current to a fixed desirable value in spite of the changes in temperature. तो जो चेंज वैसे होनी थी इसके बजाय इस सर्किट में जो होनी थी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इस को फोर्स करे कि IC स्टेबलाइज हो सके. However, here in this circuit, because of the presence of this RE, there is a negative impact, and the circuit is trying to keep the current as stable as possible. तो ये एक क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन थी. लेट्स नाउ सी कि इसे क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ सर्किट इक्वेशन हम किस तरीके से देख सकते हैं. जी ये ठीक है. अभी तक कोई क्वेश्चन हो? सर पिछले केसेस में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो VBE है ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. जी तो सर उसका इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर? जी बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा, लेकिन वो भी एक क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट में भी हम देखते हैं ना. ये तो हम जस्ट एक क्वालिटेटिवली एक जस्ट रफ सा आइडिया लिया है कि सर्किट किस तरह काम करता है. तो VBE ने चेंज होना है तो वो भी हम इक्वेशन डेवलप करते हैं और उसमें देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन VBE कैसे आप IE को या IC को मेंटेन रख सकते हैं. तो यस दैट इज़ वेरी ट्रू कि VBE ने चेंज होना है टेम्परेचर के साथ. सो अभी हम क्वांटिटेटिवली लेट्स डेवलप दैट इक्वेशन and then we can answer the question that there are two changes available. VBE will be changing, beta will be changing. These are the two problems that we are trying to address. So अभी हम equation develop करते हैं, फिर देखते हैं कि in spite of the two changes, how can we stabilize the current IE. So ये भी equation develop होती है तो ये question answer हो जाएगा. So इसको थोड़ा सा pending करें इस question को. अभी हम देख लेते हैं इस question को. So let's define an equation for this circuit. So इस तरह के सर्किट में सबसे इजी वे ये है कि आप इस को थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर लें. तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है. यहाँ पर V थेवेनिन इज इट्स जस्ट अ वोल्टेज डिवाइडर R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स VCC, एंड R थेवेनिन कैन बी रिटन एज R1 इन पैरेलल विद R2. राइट. ये थेवेनिन इक्विवेलेंट हमने ऑलरेडी भी निकाला है. आई होप कि इसके साथ सारे कंफर्टेबल हैं. इतने सर्किट का ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है. ठीक है, इससे एग्री करते हैं. हाँ जी, ये बात ठीक है. यस सर. सो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर आप यहाँ पर रिप्लेस कर लें, सो दिस इज अ सर्किट दैट वी हैव. तो ये आपके पास सर्किट आ गया. राइट, वी हैव डिटरमिन्ड द थेवेनिन इक्विवेलेंट एंड देन वी रिप्लेस द थेवेनिन इक्विवेलेंट and incorporate the Thevenin equivalent into this circuit. So let's now develop the equation and then we answer the question how this circuit will negate the changes against variations in VBE and beta. So इसकी analysis कर लेते हैं. ये आपके पास IB है. This is the passive sign convention. This is your VBE. This is IE along with the passive sign convention, right? So let's apply KVL along this loop L. So by KVL, VBB, यहाँ पर V थेवेनिन को उसने VBB का नाम दिया है, तो चलें वो सेम नोमेनक्लेचर यूज कर लेते हैं. R थेवेनिन को आपकी बुक ने RB कह दिए. So जस्ट नोमेनक्लेचर है, कोई भी नाम यूज कर लें, इट्स फाइन. So VBB is equal to IB RB plus minus plus minus plus minus plus VBE plus IE RE, right? So let's rearrange. VBB minus VBE is equal to IB RB plus IE RE. यहाँ पर आप देखें आपके पास IB और IE है. Fortunately we know a way to eliminate one of the variables since
BJT is operating in active mode because we are talking about amplifier application. BJT has to operate in active mode. IC is equal to alpha IE is equal to beta IP, or alpha is beta by beta plus 1, IE is equal to beta IP. So IB is IE over beta plus 1. So let's make this substitution here. VBB minus VBE must be equal to IE RB by beta plus 1 plus IE RE. So let's rearrange here. So we get IE is equal to VBB minus VBE whole divided by RB divided by beta plus 1 plus RE. ठीक है, ये सर्किट एनालिसिस है, हमारे पास एक्सप्रेशन आई। न्यूमरेटर में आप देखें VBB माइनस VBE है, डिनोमिनेटर में आप देखें RB डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 प्लस RE है। सो अब हमें पता है कि VBE ने चेंज होना ही होना है टेम्परेचर के साथ, VBE ने चेंज होना है टेम्परेचर के साथ, बीटा ने चेंज होना है फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस रिपीटेबिलिटी की वजह से, बिकॉज मैन्युफैक्चरर कैन ओनली इंश्योर बीटा इन अ सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज। सो ये दोनों पैरामीटर्स ने चेंज होना ही होना है, वो प्रैक्टिकल डिवाइस की लिमिट है। So practical device के केस में these two parameters will definitely change. So we have to find conditions imposed on rest of the quantities कि ये जो changes हैं VBE की ये IE में translate ना हो या कम से कम translate हो। Similarly जो बीटा के changes हैं वो कम से कम translate हो। So what we are saying here is कि we have this IE is equal to VBB minus VBE and I divided by RB by beta plus 1 plus RE, and we have already mentioned these practical constraint कि VBE ने होना है टेम्परेचर के साथ चेंज एंड बीटा ने भी चेंज होना है बिकॉज डिवाइस टू डिवाइस वेरिएशंस की वजह से बीटा ने भी चेंज होना है। सो व्हाट वी वांट हियर इज कि इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन VBE, इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन बीटा, IE जो है वो रिलेटिवली फिक्स्ड रहे। दिस इज व्हाट वी नीड। सो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज न्यूमरेटर को देखें, न्यूमरेटर इंप्लाइज कि VBB माइनस VBE को जितना आप फिक्स्ड रख सकें उतना बेहतर है। डिनोमिनेटर में दूसरी कंडीशन दे रहे हैं कि द सेकंड रिक्वायरमेंट इज कि RB बाय बीटा प्लस 1 प्लस RE को जितना फिक्स रख सकें उतना आप फिक्स रखें। अब आप देखें कंडीशन 1 की बेसिस पे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या कंस्ट्रेंट रखें, VBB को क्या करें कि आपके पास ये न्यूमरेटर की वजह से मिनिमल ट्रांसलेशन हो ऑन मिनिमम चेंज ट्रांसलेट हो ऑन IE, क्या किया जा सकता है? VBB को इंक्रीज कर लो। तो VBB को आप जितना बड़ा रखेंगे, ये कंडीशन 1 हमें बता रही है कि VBB को जितना बड़ा रखेंगे VBE से, क्योंकि VBE में चेंजेस तो होनी है ना, तो हमने बाकी सर्किट को कंट्रोल करना है और उसको देखना है कि वो इस तरह का बनाया जा सकता है कि ये चेंजेस मिनिमम ट्रांसलेट हों IE में। तो VBB को आप जितना बड़ा रखें VBE से उतना अच्छा है। अभी हम देखते हैं कि इसमें बाकी क्या ट्रेड ऑफ्स हैं, वो भी हम डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन ये कंडीशन ने हमें ये बताया है कि VBB को आप जितना बड़ा रख लेंगे VBE से उतने ही आपको स्टेबल IE मिल जाएगा। ये क्या बता रहा है आपको जी, ये क्या बता रहा है? सेकंड कंडीशन से क्या पता लग रहा है? और भी इंक्रीज कर लो। इन अदर वर्ड्स RB बाय बीटा प्लस 1 को आप जितना स्मॉल रखेंगे RE से, यहाँ RE को जितना बड़ा रखेंगे RB बाय बीटा प्लस 1 से उतना बेहतर है। सो RB बाय बीटा प्लस 1 को बहुत आप स्मॉल अगर कर सकें रिलेटिव टू RE, या अल्टरनेटिवली आप कह लें कि RE को आप जितना लार्ज कर सकेंगे RB बाय बीटा प्लस 1 की निस्बत, तो दैट विल बी बेटर। एंड बीटा के जो वेरिएशंस हैं उनकी टर्म्स में रिजल्टिंग IE वेरिएशंस विल बी स्मॉल इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो अभी तक हमने ये एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप की है एंड दैट रिलेशन वाज इंडिकेटिंग कि IE VBE के साथ किस तरह रिलेटेड है और बीटा के साथ किस तरह रिलेटेड है, और हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बेसिस पे दो कंडीशंस निकाली हैं दैट विल गिव अस सम आइडिया कि सर्किट में किस तरह के कंस्ट्रेंट्स इंपोज किए जाएं कि मिनिमल वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर which are related to VBE and minimal variations from device to device जो डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेटेड हैं, जो बीटा में रिजल्टिंग वेरिएशंस हैं उसकी वजह से करंट IE कम से कम वेरी करे।
सो अभी नेक्स्ट हम लेट्स हैव अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेट्स स्टडी दीज टू कंडीशंस एंड सी कि इन कंडीशंस का क्या मीनिंग है। वीबीबी को कितना प्रैक्टिकली कितना बड़ा किया जा सकता है वीबीई से, आरबी को कितना छोटा किया जा सकता है आरई से, और प्रैक्टिकल इश्यूज क्या हैं जो कि उसके साथ रिलेटेड है। सो वी विल सून फाइंड आउट कि देर आर ट्रेड ऑफ्स, सो वी कांट हैव देर आर ट्रेड ऑफ्स। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे कि अगर आप वीबीबी को बहुत बड़ा कर देंगे तो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव स्विंग जो है वो स्मॉल हो जाएगी। सो देर इज़ अ कॉम्प्रोमाइज हेयर। आप वीबीबी को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन देन यू विल हैव टू ट्रेड ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्विंग। सेकंड कंडीशन के टर्म्स में भी हम देखेंगे कि आरबी को छोटा करने की भी एक लिमिट है, बिकॉज आरबी को आप जितना छोटा करते जाएंगे उतनी आर इन छोटी होती जाएगी। रिकॉल करें कि आर इन जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। सो वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए आर इन जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, एक्सेप्ट फॉर द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट्स वेयर आर इन इज ऑलरेडी स्मॉल इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज आपको आर इन जितना लार्ज मिले उतना अच्छा है। सो अगेन वी हैव अ ट्रेड ऑफ हेयर कि आप बीटा स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर लें या आप आर इन अच्छी रख लें। सो वी हैव टू बैलेंस देम ऑल आउट, और हम कोई उस तरह से नहीं डिज़ाइन कि परफेक्ट बीटा के टर्म्स में स्टेबिलिटी मिल जाए या परफेक्ट टेम्परेचर के टर्म्स में स्टेबिलिटी मिल जाए। वी हैव टू हैव अ ट्रेड ऑफ। We can achieve more beta stability but have to compromise on the signal swing, or we can achieve lesser temperature stability and have better signal swings. So signal swings का और टेम्परेचर स्टेबिलिटी का आपस में कॉम्प्रोमाइज है, एंड सिमिलरली इनपुट रेजिस्टेंस का और बीटा स्टेबिलिटी का आपस में कॉम्प्रोमाइज है। बाय बीटा स्टेबिलिटी आई मीन्स कि करंट आई ई आपका कितना स्टेबल है रिलेटिव टू द चेंजेस इन बीटा। सो लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि इन कंडीशंस का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है और किस तरह से उस ट्रेड ऑफ किया जा सकता है, और क्या प्रैक्टिकल डिज़ाइन ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से वी कैन हैव अ रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज between stability of the bias point and signal swings along with the input resistance. So break कर लेते हैं, break के बाद इसको continue करते हैं।